Exercise 4.3, question number 1 and 2 will be discussed in this part. The concept related to this exercise is already discussed in previous part. You can check the link in description box. So let's start. Question number 1. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. हमें graph draw करने हैं. We have learned the concept. First of all, हम given equation के solutions find out करेंगे. At least two solutions are required and then we'll plot on the graph. ग्राफ पे कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है वी हैव लर्नड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो वील बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वील पुट x इक्वल्स टू 0 बिकॉज वेरिएबल को 0 रख के अगर हम सॉल्व करेंगे इट वुड बी इजी. सो वील पुट x इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन. 0 प्लस y इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज y हमारा क्या आ गया 4. 0 4 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया हमें. नाउ वील पुट y इक्वल्स टू 0. पुट y इक्वल्स टू 0. सो क्या होगा हमारा x प्लस 0 इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4. सो हमारा x क्या मिल गया हमें 4. सो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया 4 0. टू सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड. नाउ वील प्लॉट वन बाय वन. 0 4 को प्लॉट करने के लिए वील पुट इट ऑन y axis positive side. Here it will be plotted. This point is 0 4. 4 0 on x axis positive side 4 0. Now we'll join these two lines. This given line is of equation x plus y that is equals to 4. In this way this entire procedure is done. Second part is x minus y equals to 2. First of all we'll put x equals to 0 and then solve the equation. Put x equals to 0. 0 minus y equals to 2 minus y equals to 2 imply y equals to minus 2. In this way. Then we'll put y equals to 0. What we'll get? X minus 0 equals to 2. Implies x equals to 2. So x is 2. So हमें दो solutions मिल गए 0 minus 2 and 2 0. 0 minus 2 will be plotted on negative side of y axis. Here 0 minus 2 and 2 0 on x axis. Here now we'll join these two lines in this way. This given line is of equation x minus y equals to 2. Then third part is y equals to 3x. First we'll put x equals to 0. Y equals to 3 into 0. Y equals to 0. ये जो फॉर्म की इक्वेशन है हम स्टडी कर चुके हैं. इट ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन. तो पहला पॉइंट हमें 0 0 मिल गया. देन we'll put x equals to 1. It will be very easy to plot. Y equals to 3 into 1 imply y equals to 3 like this. So we have two solutions now. 0 0 will be marked here at origin in this way and then 1 3. 1 is here, 3 is here. We'll mark it as like this and then we'll join these two lines. This line is of equation y equals to 3x. Fourth part is 3 equals to 2x plus y. First of all we'll put x equals to 0. Put x equals to 0. 3 equals to 2 into 0 plus y. 3 equals to 0 plus y implies y equals to 3. So first solution is 0 3. Then we'll put x equals to 1. We can put any value which is convenient. So we'll get 3 equals to 2 into 1 plus y.
3 equals to 2 plus y. 2 will be shifted to left hand side. 3 minus 2 implies y equals to only 1. So y 1. So two solutions we are having now, 0, 3 and 1, 1. We'll plot them. 0, 3 on y-axis like this. This is 0, 3 and 1, 1 here on first quadrant. We'll join these two lines in this way. This line is of equation 3 equals to 2x plus y in this way. So this is the entire process of drawing a linear equation on a graph. Second question, give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? We have to give the equations of the two line passing through 214. ये हमारा पॉइंट है 214. So हम कुछ ऐसी इक्वेशंस लिखेंगे. 2 हमारा होता है x कोऑर्डिनेट, 14 हमारा y कोऑर्डिनेट है. x इसे मान के और y इसे मान के हम अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट का हम आंसर करेंगे, देन हाउ मेनी मोर का, एंड देन y. So the solution begins. Two lines, infinite lines पास होंगी. ये हम कैसे जज करेंगे हम देखेंगे. Two lines passing through point 214 are, ये x है ये y है, इन दोनों को ऐड करें तो 16 आएगा. तो हम लिख सकते हैं x plus y equals to 16. सिंपल. अगर हम इन दोनों को माइनस करें, x में से y को करेंगे, we'll get -12. तो हम लिख सकते हैं x minus y equals to -12. वेरी सिंपल. यहाँ पे टू लाइन्स बोला था, इस तरीके से हम इनफाइनाइट लाइन्स इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं. हम कर दें अगर 2x plus y, 2x plus y क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का डबल 4, 4 plus 14 that is 18. 2x plus y equals to 18. So इस तरीके से the answer of our second part, how many more such lines are there, is infinite number of lines are there. And why? Because through a point infinitely many lines can be drawn. एक point जो हमें given है उससे हम infinite lines draw कर सकते हैं और इस तरीके से हम form कर देंगे. फिर इनके solution निकाल के we can plot it on the graph as we have did in first question. So this is all about these two questions. If you have any doubt in any question, you can ask your queries in comment section below.